स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथ। सब बच्चे अपने काउंटडाउन की बुक्स ओपन कर लें और ओपन कर लें पेज नंबर 153, यूनिट 12, पोजीशंस, ओवर एंड अंडर। ओके, और ऊपर, अंडर, नीचे। ओके, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड। एरोप्लेन जो है वो क्लाउड के ऊपर से फ्लाई करता है। द हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अंडर द ट्री। लेकिन हेलीकॉप्टर वो क्लाउड्स के ऊपर फ्लाई नहीं कर सकता, वो हमेशा क्लाउड्स के अंडर ही फ्लाई करता है। ओके, फार एंड नियर। फार, फार, दूर, नियर, करीब। द डॉग इज नियर द हाउस। Look at this. Dog is sitting near the house. Okay, the car is far from the house. Okay, now right and left. The arrow is pointing to the right. Okay, ये मेरा right hand है ना? Arrow is pointing to the right. This arrow is pointing to the left. Okay, this is positions. Now everyone open page number 154. Okay, position. Fill in the blanks with the correct position. Okay, look at this picture and we fill this blank with the help of this picture. Okay, first blank. The rabbit is jumping dash the ball. The rabbit is jumping over the ball. Everyone write here over. Okay. B. The dog is dash the tree. The dog is under the tree. Okay. Under the tree. C. Blank number C. The girl is standing dash the ball. The girl is standing near the ball. D. The clouds are dash from the tree. Clouds are far from the tree. Okay. Blank E. The cat is on the dash of the dog. The cat is on the left of the, देखें ये dog की left वाली, left on the left of the dog. Okay. F. The ball is on the dash of the tree. बॉल जो है वो ट्री की राइट साइड पे है। राइट here, right. The ball is on the right of the tree. Okay. All of you done? ठीक है बच्चों, जिस तरह ये मैंने किया है बिल्कुल आपने भी इसी तरह करना है। जब आप स्कूल ओपन होंगे तो मैं ये आपकी चेक करूँगी। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।